Hare Krishna, everyone. So, welcome to all of you. So, as we were discussing yesterday, Janmashtami is very close, and like every year, we have started my Sweet Lord series in which we discuss various pastimes of Lord Krishna. So, Hare Krishna, everyone. We had discussed that Krishna is very sweet, and in fact, each and everything of Krishna is very sweet, Madhura. So, it is told in the scriptures that not only Krishna is everything. In fact, his devotees are also very sweet in that sense, because they are also connected with Krishna and they also becomes Krishnized. Just like we see, there are so many things in the world. When they get in touch with something, so they become ironized or galvanized, or like that. They become completely saturated with that thing. In similar manner, when a devotee gets in touch with Krishna, he becomes Krishnized. Completely, he becomes always thoughtful about Krishna only. He's not able to think anything other than Krishna. So a pure devotee's sign is that whenever he is even standing or is sleeping, he's eating, he's dancing, or he's going anywhere. So whatever he does for the happiness or for the satisfaction of Krishna. For him, there is nothing in this world except Krishna. And Srila Prabhupada also tells that position of a devotee is that he sees everywhere Krishna, and every living entity also part of Krishna. There is a quality of a devotee. Krishna tells in Bhagavad Gita, Mame Vamshu Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manashashtani Indriyani Prakriti Sthani Prashati. तो इस संसार में जो भी चीज हम हमारे आसपास में देखते हैं, सो उसमें जो जीव हैं वो मेरे अंश हैं. कृष्णा क्लियरली टेल्स, राइट. इनफैक्ट 13 चैप्टर में आज ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे. तो कृष्णा बोल रहे हैं कि वो मेरे ही अंश हैं. और कैसे अंश है? सनातन अंश है. मतलब वो हमेशा जो है मेरे से अलग है, मेरे से सेपरेटेड है. जस्ट लाइक भिन्ना प्रकृति रष्टता, वो मेरे अंश है. लेकिन साथ में रूपा शब्द यूज करते हैं पार्सल. मीन्स दे आर कनेक्टेड आल्सो विद मी through feelings, through seva, right? Through loving exchanges. Like that, they are connected with me. So like that, in one sense, we are connected with Krishna, and at the same time, we are, you can say, separated from Krishna. So here also, we'll see a beautiful pastime in which a devotee, how he got connected with Krishna and he was feeling separation from him. So much so that it was beyond imagination. So there was a devotee named Vishnu Chitta. तो विष्णु चित्त जो है भगवान के अनन्य भक्त हैं. उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े, सारे पुराण, उपनिषद, वेद और जितने भी स्क्रिप्चर्स हम सोच सकते हैं सारे पढ़े, और पढ़ने के साथ में भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे हमेशा. तो डिवोटी की ये क्वालिटी है कि वो कभी भी अपने ज्ञान को जताता नहीं है. इज वेरी हम्बल, मीक एंड वेरी हम्बल एट द सेम टाइम. एंड ही अंडरस्टैंड्स द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर इज बेसिकली टू सर्व कृष्णा, राइट. So you understand that thing, and that becomes the life's goal of that devotee. So Prabhupada tells, when we read the scriptures again and again and again and again, Srimad Bhagavatam is telling, devotional service gets established in the heart of a devotee as irrevocable fact. मतलब किसी भी तरीके से इस डिवोशनल सर्विस को खत्म नहीं किया जा सकता. तो भागवतम पढ़ने का ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि हमारे हृदय के अंदर भगवान की जो सेवा है वो बहुत जल्दी एस्टैब्लिश हो जाती है. नहीं तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमारे दिमाग में बने रह सकते हैं जो हमारी भक्ति को खराब कर सकते हैं.
बट भागवतम जो है इसे अमल पुराण कहा गया है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई कंटेमिनेशन नहीं है। इट्स कंप्लीटली प्योर पुराण है, जिसमें भगवान का केवल केवल शुद्ध भक्ति दिया गया है, कर्म ज्ञान आदि से इसको फ्री कर दिया गया है। नो स्पेकुलेशन एट ऑल। सो कोई भी व्यक्ति जब भागवतम पढ़ता है किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से, तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। Otherwise, he'll keep on wandering throughout the world. He'll not able to reach to this conclusion. In fact, so reaching to this conclusion that devotional service is the only way by which we can win Krishna. This is very difficult for the people to understand, because they will give different philosophies. They'll tell you follow any path, you'll reach to that only. So here we can see Vishnu Chitta, although he had read all the scriptures nicely and he had gone through all the Vedas, but he was engaged in the service of Krishna. That's why his name became Vishnu Chitta. Means his Chitta is always in Vishnu. That was his quality. Every time he's thinking about Krishna only, his pastimes, his leelas, his gunas, his paraphernalia, his dham, Vrindavan, or about his other devotees. Like that, he's always thinking about Lord Vishnu or Krishna. So this Vishnu Chitta, he had grown up a beautiful garden. उस गार्डन के अंदर भगवान के लिए उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे अलग अलग प्रकार के फूलों के जो हैं पौधे पेड़ वगैरह लगाए। एक तरफ तुलसी लगाई खूब सारी, और एक तरफ फूलों के अलग अलग प्रकार के भांति भांति के पौधे और पेड़। और हर दिन उन पेड़ों से, इन पौधों से वो फूल चुनते थे, तुलसी चुनते थे, और उसकी बहुत ही सुंदर गार्डन बना के, और उनके पास में एक वटपत्रशाही कृष्ण है ना, जब प्रलय के समय पर भगवान कृष्ण ने मंडूक ऋषि को दर्शन दिए थे कि एक जो है बरगद का जो पेड़ है उसके वट माने बरगद का पेड़, तो उसके ऊपर वो लेटे हुए हैं और अंगूठा चूस रहे हैं अपना पैर का। तो वो है वटपत्रशाही कृष्ण। तो उनका मंदिर है पास में, तो डेली के डेली जाके उनको वो अपने हाथों से वो गार्डन ऑफर किया करते थे। बहुत ही ध्यान रखते थे, क्लीन रखते थे हर फूल को, और गार्लैंड को भगवान तक ऑफर करने तक किसी भी तरह की अपवित्रता वो नहीं बरतते थे। कंप्लीटली शुचि। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। ही बिकम्स ऑटोमेटिकली अ ब्राह्मणा। उसको ब्राह्मणिकल रूल्स अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति करते तो ये चीजें अपना भगवान जो है वो चीज सिखा देते हैं। So he was offering this garland out of love every day to Krishna. Beautifully he was offering with full love and devotion. One day when he reached in the morning to pluck the flowers, what happened? Actually, he heard some sound of somebody's crying. So he was surprised, like, who's there in this garden? Because nobody else can come except him in that garden. He had made the boundary and you can say protection of that garden like that nobody can enter except him. So he was completely sure कि कोई आ ही नहीं सकता. Then from where this sound is coming? He traced that sound and he found that one little girl, she was lying under the bushes. जो उन्होंने गार्डन लगाया उसमें फूलों के और जो तुलसी है उसके बीच में, वो जो है छोटी सी एक बच्ची जो है, न्यू बॉर्न बेबी, it was lying there. And he was surprised from where this baby girl has come, because he could not find anyone nearby. So then he's pondering upon this thing and he's again and again thinking. Then he understood that probably Krishna only has given me this baby girl so that I can take care of her, because he was not having any child at that time. So we should not understand if sometimes miseries are in the life of devotee, then Krishna is not meherban on me, Krishna is not happy with me, because this we should leave up to him only. Whatever Krishna wishes for a devotee, that is best thing for him, right? Sometimes we make conclusions that I am doing such and such bhakti, but still Krishna is not listening to me. Krishna is not giving me this benediction. Krishna is not giving me this job, or Krishna is not helping me in this way. I want this thing to happen, but why he is not helping? So actually we should understand that Krishna, he knows our heart and heart desire. So जो सबसे बढ़िया रहेगा वो हमारे लिए करेंगे। तो जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है
तो पेशेंट को दर्द हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पेशेंट के लिए खराब है। तो उसी तरीके से भक्तों को यह है ना समझना है हम सभी को कि हमारे लिए जो भगवान करते हैं वो बेस्ट रहता है। So the same thing here, when he got this baby girl, he understood this is the blessing of Krishna. No issue. I'll take care of her nicely. And he started bring her, उसका लालन पालन शुरू किया, and then started feeding her, and then because he was a great devotee of Krishna, so he's always teaching her the glories of Krishna, always teaching some leelas. Oh, you know, what did Krishna do in such and such situation? If she's taking bath, suppose, then and a small girl, so then he will tell Mata Yashoda कैसे कृष्ण को नहलाती थी. If he is eating, then Mata Yashoda कैसे भगवान कृष्ण को खिलाती थी. If he is no, she is getting dressed, then Mata Yashoda कैसे कृष्ण को dress करती थी. And like that, so many leelas, so many pastimes, and always Krishna, 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 like that. So this girl started growing, and whenever she will go out of her house, she'll play with the kids. तो वो उस वक्त कैसा खेल खेलेगी कि ओके चलिए अब इस बार हम भगवान कृष्ण के वकासुर वध की लीला को जो है उसको हम इनेक्ट करेंगे इस तरीके से. इस बार पूतना वध की लीला को हम लोग इनेक्ट करके खेलेंगे. इस बार हम लोग कंस को मारने वाली लीला को वो करेंगे. ये इस तरीके से, लाइक दैट शी इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्णा 24/7. And this girl's name was kept as Goda Devi. Why Goda? Because he got this Vishnu Chitta. He got this deity, this baby from earth. अर्थ जो है उसने उसको वहां से उठाया. So he took it as a prasad of earth. Bhumi is also, if you know, she is also like close associate of Lord Krishna. So that's how he got the name Goda Devi. Goda means earth in probably some South Indian language. So then he started telling Goda, do you know what do Krishna like the most? Goda, do you know what do Krishna like to wear? Like that, so many things he'll talk to her. So now she's little grown up and she's always thinking nothing else in her mind except Krishna. Whatever she will do, then again she'll ask to Father, Father, you're dressing me, but what Mother Yashoda exactly was giving Krishna to wear when he was at this age? What Mother Yashoda gave Krishna to eat at this age? What Mother Yashoda gave Krishna to wear? What Mother Yashoda gave to eat? What Mother Yashoda gave him to sleep? Like that, everything he was relating to Krishna. And this is a very important thing कि हम जब बच्चे हैं तो कैसे ध्यान रखना है हमें, है ना, हमारा खुद का, या फिर उनके बच्चे हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, तो उनका कैसे ध्यान रखना है. It's a very important learning because nowadays we see TV, mobile, Instagram, Facebook, WhatsApp, ना जाने क्या 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 करते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको चलाना शुरू कर देते हैं एंड उनको कभी भी जो है इस तरीके की शिक्षा नहीं मिल पाती है. प्रहलाद महाराज को भी इसी तरीके से बचपन में ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करवा करवा के नारद मुनि को शुद्ध भक्त बना दिया. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बचपन से ही भगवान की लीलाएं सुनाए. दे शुड बिकम वेरी मच अटैच्ड टू कृष्णा. छोटा बच्चा होता है so he can easily become attached to Krishna actually. So then this happened. After that, this Goda Devi, he was little grown up and now she had only Krishna in mind and she's mad after Krishna. Whatever she'll talk, it will be related to Krishna, nothing else. She just wants Krishna in her life, that's it. So actually the position of Goda Devi is very high. We should understand this thing in our mind. We should not imitate the position of Goda Devi. Sometimes we may imitate. So these are those pastimes which are actually we can get the inspiration, but at the same time we should be careful that I should not imitate the position of Goda Devi. So this Goda Devi, he's now started having the desire that I should have Krishna as the husband.
as the only husband in my life. I don't want anyone else. I can't think even about anyone else in my life. And like this kind of desire she was having, and her desire became strong day by day, day by day, day by day. But now she is thinking, how can I get married to Krishna? Because Krishna is such a wonderful person. He has created this whole creation, and I'm a village girl. Nobody knows even me. So why he'll marry me? Why Krishna will come to me? This is unfair desire. It looks like that. But at the same time, she is attached to Krishna. So one day she got an idea. How can I get married to Krishna? So in the marriage, one ritual is कि जो garland होती है, जो वर है वो वधु को पहनाते हैं, वधु वर को पहनाते हैं, and marriage is considered done like that, right? So she was knowing already कि father जो है हर दिन जो है भगवान को जाके, कृष्ण को जाके garland offer करते हैं. So same garland before he gives to Krishna, I'll wear, and that garland my father will go and Lord Krishna will wear. So in that manner, I'll get married to Krishna. So she planned like that, and she just wore that garland, and she reached in front of Krishna. Oh Krishna, how I'm looking. Again, you see, just I'm telling, is very, very high position. So we should not imitate. So this Goda Devi, she is just asking Krishna. She's trying to talk to Krishna. Oh Krishna, she's asking, and then after that, before his father arrives, she kept back that garland. So then father arrives. He took the basket, reached to the temple, and his father is very meticulous in doing seva. Now it's a very important point to understand. Before any seva he'll do, he'll be very, very meticulous. बहुत particular है हर चीज के लिए. Just he lifted the garland, and his eyes could see that there was hair in that garland, and he was very disturbed, very disturbed. How this hair is here? Because he was very पक्का कि भगवान को केवल शुद्ध चीजें ही अर्पित करनी है, कोई भी खराब चीज अर्पित नहीं करनी है. So कोई भी अपवित्र चीज जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, और कोई गंदगी हो गई, it cannot come in the things which are going to be offered to Krishna or near Krishna even. So he was very disturbed, and he thought how these things can come. So he decided, he started pondering, he started thinking, कि कैसे ये बाल इसमें आया? He observed that hair is very long. It means it belongs to some girl. It cannot be of man, at least of mine. He's thinking like that. And who can be that girl or a lady? Nobody else is there in his house, and nobody can touch also that garland, because he was very careful. So it must be Goda Devi. He reached on that conclusion, and he became very angry. He came crying, oh my Lord, please forgive me. मैं आपको इतने सालों से garland offer कर रहा हूँ, पर आज मेरी बेटी की वजह से मैं आपको garland offer नहीं कर पा रहा हूँ. And he started really out of you can say glani. He started crying, and like that only he came to house. He called Goda Devi. Goda, where are you? And Goda, she understood her father is very angry, something is wrong. Goda Devi, she comes here, and he just slapped her. You are not my daughter from now onwards. I reject you, because you have actually touched that garland which should have been offered to Krishna. So this is a great disservice from your side. So like that, he tells to Goda Devi, and Goda Devi starts crying. Father is also crying. Goda Devi is also crying. Both are crying. So this is a very important understanding now. In devotional service, these things actually gives ananda to the Lord sometimes. And this is a different kind of ananda which is very difficult to be conceived in for ordinary man to understand. So then this father crying is making another garland. Oh Lord, please forgive me, please forgive me. I am just making another garland to offer you. And he makes the garland successfully. He reaches to temple. He just offered to the Lord, and garland slips from his neck. And now he's disturbed. Oh Lord, please forgive me. I understand that मैंने आज आपकी सेवा अच्छे से नहीं की. Please accept this garland. Again he offers, and again that garland falls down.
He's again disturbed, starts crying even more. Then Lord personally tells to this Vishnu Chitta that, oh Vishnu Chitta, actually your daughter is very pure. Her feelings are very pure. I want that garland only which she was wearing. And you had brought earlier. मुझे वही garland आप अर्पित करिए. I'll be so happy with that garland. And Vishnu Chitta was overwhelmed with this thing. And oh Lord, my daughter's garland you want is my great fortune. Because I was offering you garland, but that garland which she has wore, you want to wear that garland. Yes, not today only. Every day I want to wear that garland only, which she first should wear, and then I'll accept that garland. And then he runs to his house, goes back, and he says, oh Goda, where are you, Goda? So he tells, Goda, you are not actually my daughter, you are a great devotee of the Lord. And you see what is happening. Krishna wants your garland which you have worn. And she was also crying. So he asks, oh father, what is happening? Please tell me. I'll tell you later on. Where is that garland? Please give me. And he takes that garland and offer it to Krishna. And this time it was successful. So every day this ritual kept on going till the time Goda Devi was there. And later he comes back and actually asks forgiveness from his daughter. That Goda Devi, please forgive me. I could not understand your position. You're such a great devotee of the Lord. That Lord wants your used garland in her neck, in his neck. So please forgive me because I am not a devotee of your caliber. So we can understand that's why the topic name is Garland of Love. So Krishna actually, why then he tells your name is not Goda Devi, just your name, you are not Goda, you are Alvard. Alvard means who controls the Alvarnath, or one more name of the Lord is Alvard, like that. Who controls the Alvard means the Lord. So her name became Alvar. So there are 12 Andalas. So unme se her name is Andal, I think, or Alvar. I'm getting confused. That's just a minute. I'll just check. Her name was Andal. So there are 12 Alvars. उसमें से इनका नाम होता है Andal. Andal means who controls Alvar, Alvarnath. So her name became like that. She is the only one lady among the 12 pure devotees of Krishna, South India में जो रहते हैं. And still today you will find many places जहाँ पर भगवान जो हैं रहते हैं, तो उनके साथ में गोदा देवी का भी एक मंदिर होता है. And she is considered, actually she is incarnation of Lakshmi Devi. So she is considered as you can say wife of Rangnatha. Right? She was later on married to Rangnatha on the order of Rangnatha or Krishna only. So in this pastime we can see how Lord reciprocated with this Vishnu Chitta and Goda Devi. So this can happen only when we make our heart very pure, and that is possible when we follow the order of another pure devotee, just like we have Srila Prabhupada in our life. So Prabhupada was also such a devotee, pure devotee, who could actually reciprocate, who would actually talk with Krishna, who could actually hear the things from Krishna directly. So when we get the blessings of such a devotee, we can also easily achieve that love of Godhead. Actually हम सभी वैष्णवों का गौड़ी वैष्णवों का यही टारगेट है, कृष्ण प्रेम. हम लोग 10वां जो अपराध है वो पढ़ते हैं. 10th offense is to not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on the subject. It is also offensive to be inattentive while chanting, right? Chanting के वक्त inattentive रहना भी क्या होता है, अपराध होता है. Sometime we may be using the mobile, or we may be doing some other work. It may be even a devotional service also, but that is also aparadh. So to be inattentive while chanting, every devotee who claims to be Vaishnava must carefully guard himself against these offenses in order to quickly achieve the desired success, which is Krishna prema. तो अगर हमें भगवान के प्रति प्रेम चाहिए, तो हमें जो है ना भगवान के नाम का बहुत अच्छे तरीके से जप करना है, बहुत अच्छे से सेवा करना है. और जैसे प्रभुपाद जी हमें गाइड कर रहे हैं
उसके हिसाब से हमें चलते रहना है. For sure we'll also achieve the love of Godhead. Right? So this was episode 5 of My Sweet Lord, and we'll hear next episode tomorrow, episode number 6. Now a little bit we'll discuss from Bhagavad Gita. We had a discussion yesterday also. I'll just share the screen with you all. So we were hearing, we understood कि भगवान ने यहाँ पर जीव को पुरुष क्यों बोला है. जीव को पुरुष क्यों बोला है? एनीवन कैन टेल मी? इस चैप्टर का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना. तो क्यों जीव को पुरुष बोला है भगवान ने, जबकि वो भी प्रकृति ही है? अगर भगवान की हम लोग अंडरस्टैंड करें तो कृष्णा इज ओनली द पुरुष इन द होल क्रिएशन, एंड ओनली, है ना, Jiva you should be considered as enjoyer, Prakriti. Then why is considered as Purusha here? Anyone? हरे कृष्ण प्रभु. पुरुष मतलब कंट्रोलर. तो जीव भी प्रकृति पे कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए उसको पुरुष कहा गया. ओके. और उसको कह सकते हैं हम पुरुष, यानी होता है एंजॉयर, जो एंजॉय करना चाहते हैं. जैसे कृष्ण एंजॉय करते हैं और हम एंजॉयड है. तो जो भौतिक जगत में आते हैं हम, तो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? एंजॉय करना चाहते हैं चीजों को, है ना, प्रकृति को एंजॉय करना चाहते हैं. तो इसलिए जो है भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में बतलाया है, भूमिरापन लो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा. तो ये जो प्रकृति है उसके बारे में बता दें. वो प्रकृति क्या है? 8 तत्वों से मिलकर बनी है. भूमि आपन लो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार. इन 8 तत्वों से ये भूमि, ये प्रकृति बनी है. लेकिन इन 8 तत्वों के अलावा एक और जो है तरह की एनर्जी है भगवान की. वो क्या है? जीव भूत महाबाहो अप्रयम इतस्त्व अन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये दम धार्यते जगत. तो जो दूसरी तरह की जो प्रकृति है वो क्या कर रही है? इस प्रकृति का दोहन कर रही है. ये दम धार्यते जगत, इस जगत का शोषण करने में लगी है. इसीलिए भगवान जो है स्वयं उसको पुरुष कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता है. राइट? तो ये हम लोगों ने देख लिया था कल, प्रकृति पुरुष. ओके. तो अर्जुन पूछ रहे प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है. तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, अनलिमिटेड एंजॉय करना चाहते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो. राइट? The enjoyment which we want, it should be unbounded. Just like we see Hiranyakashipu, Ravana, Kumbhakarna, or Kams, like that, so many big demons we see. उनके पास में बहुत कुछ होने के बावजूद उनकी भूख शांत नहीं होती है. So this enjoying tendency is there in us. That's why we are called as पुरुष. अब ये पुरुष, ये जो जीव है, ये किसके अंदर रहता है? क्षेत्र. क्षेत्र, क्षेत्र किसे कहा गया है? जैसे कि हम कोई खेती करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संस्कृत में क्षेत्र कहा जाता है. तो यहाँ पर भी जो हम जीव हैं, ये क्या कर रहे हैं? कर्मों की खेती कर रहे हैं. अलग अलग कर्म होते हैं, उसके हिसाब से हमें यह है भांति का शरीर मिलता चला जाता है. अलग अलग शरीर मिलता है, फिर उस पर भी हम लोग खेती करते हैं और नए नए कर्म बनाते हैं, और इस तरीके से हमें दूसरा शरीर मिलता जाता है. और ऐसा करके हम लोग न जाने कब तक ये शरीर धारण करते रहते हैं. तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि यही क्षेत्र होता है अर्जुन. तो जो भी व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है कि मैं ये क्षेत्र हूँ, मैं ये क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हूँ, है ना, बोलते हैं प्रभुपाद जी इसके परपंड में बोलते हैं जगह. If somebody understands this 13th chapter of Bhagavad Gita, actually he has understood the whole Bhagavad Gita. He's understood the whole Bhagavad Gita. So it's a very important to understand. हम शरीर नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम
इस शरीर में रहने वाले एक भगवान के छोटे से अंश जिसको भगवान ने हमें रेंट पे दिया है। इस 13 चैप्टर के माध्यम से इस चीज को भगवान यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं। क्षेत्रज्ञ हैं हम। क्षेत्रज्ञ क्या होते हैं? जो शरीर को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन रियल क्षेत्रज्ञ कृष्ण हैं, वो यहाँ पर भगवान आगे बताते हैं। हम एंजॉयर नहीं है वास्तव में। कृष्णा ने हमें फ्रीडम दिया एंजॉय करने का। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस रेंट वाली जगह पे, क्षेत्र वाली जगह को अपना मान बैठे हैं। राइट? तो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। तो वो क्षेत्रज्ञ क्या क्या है भगवान अगले इसमें बताते हैं। तो कृष्णा ने बता दिया क्षेत्रज्ञ। अब कृष्णा बोल रहे हैं क्षेत्रज्ञ माँ चापी माम विद्धि है अर्जुन। तुम भी क्षेत्रज्ञ हो, लेकिन मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। सो इट्स क्लियरली टेलिंग दैट कृष्णा हु इज डिक्लेयरिंग 15 चैप्टर कि तुम मेरे अंश हो। तो कृष्ण भी जो है क्षेत्रज्ञ है और आप भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन आप कृष्ण के अंश हैं। तो आप जो है बहुत छोटे से क्षेत्रज्ञ हैं, मतलब आप केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं। लेकिन कृष्णा सर्व क्षेत्रेषु भारता, he not only knows about his about our body, he knows about each and every body. इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? omniscient. He knows about each and everything in the whole creation. Right? Krishna tells that through his energy, through Paramatma feature, है ना, is expanded everywhere. So he knows about each and everything. कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। तो हर किसी के हृदय में वो परमात्मा रूप में विराजमान है। सर्व क्षेत्रेषु भारता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्यज ज्ञानम मतम मम। तो जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है, क्षेत्र क्या है, फर्स्ट क्षेत्रज्ञ क्या है, सेकंड क्षेत्रज्ञ क्या है, वही मेरे हिसाब से ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या हो गया? ज्ञान का मतलब केवल और केवल मेटेरियल साइंस नहीं, जिसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, और वो भी आधा अधूरा रहता है। एक्चुअली क्षेत्र का ज्ञान क्या होता है वो हम 14 चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। फिर भी अगर हम थोड़ा समझना चाहें तो ये जो बना है 8 एलिमेंट से बने हैं। तो कोई भी एटम जो है वो 8 एलिमेंट्स को नहीं बनाता है, बल्कि एटम 8 एलिमेंट से बना हुआ है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस संसार में जो भी पदार्थ हम देखते हैं, लेट्स से हम लोग बोलते हैं वाटर, एक्चुअल में वाटर जो है किसी एटम से नहीं बना हुआ है। वाटर किससे बना हुआ है? वाटर एक्चुअल में जो है खुद अपने आप में एक एलिमेंट है, और वाटर जो है दूसरा जो एटम है उस एटम को बनाता है। कोई भी एटम इस क्रिएशन के अंदर हो, उसके अंदर ये आठों के आठों चीजें मौजूद है। मिट्टी, हवा, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। इसीलिए जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं तो एक एटम से इतनी सारी न्यूक्लियर एनर्जी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो अग्नि मौजूद है। हर एटम के अंदर अग्नि मौजूद है। जब हम दो पदार्थों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? एक्चुअली वो एटम के अंदर से आती है। विस्फोट भी हो जाता है, कभी अग्नि निकलती है, कभी किसी रिएक्शन से पानी निकलता है, कभी किसी रिएक्शन से गैस निकलती है, कभी किसी रिएक्शन से कुछ और निकलता है। तो क्यों है? क्योंकि हर एटम के अंदर ये पहले से विद्यमान है, और जैसे इसको फेवरेबल सर्कमस्टेंस मिलता है, वो एनर्जी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो एक्चुअल में केवल मटेरियल ज्ञान होने से पर हमको किसी भी तरीके के, भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मटेरियल केवल क्षेत्र के बारे में पता होने से उसको ज्ञान नहीं बोल रहे हैं। वह केवल भौतिक ज्ञान हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान की यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है। 12 चैप्टर में भगवान से अर्जुन ने भक्ति के बारे में पूछा कि भक्ति क्या होती है, उसको मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, साकार और निराकार में क्या हाईएस्ट है। ऐसा करके भगवान से भगवत गीता के 12वीं अध्याय के स्टार्टिंग में अर्जुन ने पूछा, और भगवान ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। लेकिन अर्जुन जो है वो ये जानना चाहता है अभी कि ठीक है भक्ति में समझ गया। अब एक्चुअल में भगवत गीता अगर चाहे तो 12वें अध्याय तक काफी है भक्तों के लिए,
लेकिन फिर भी हम और डिटेल में समझना चाहे चीजों को, कुछ लोगों का रहता है दिमाग थोड़ा सा, उनको बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए, तो ओके यू कैन रीड 13 to 18 चैप्टर, नो इश्यूज। 13 chapter very complicated, 14 chapter even more complicated, right? 15 chapter you will understand, oh, this material world is actually ulta reflection of the spiritual world. 9, 16, 17, 18 in understand वर्ण व्यवस्था, फेथ क्या होता है, प्रकृति के 3 गुण कैसे हर चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। So this is actually you can say ज्ञानी kind of approach. Of course हम जैसे भक्तों के लिए वो ज्ञानी अप्रोच नहीं, लेकिन many people they tell like this is actually ज्ञान योग. So their Jnana Yoga is different, our Jnana Yoga is different. Our Jnana Yoga is actually Bhakti Yoga only. We are approaching these chapters also in Krishna conscious manner. Jnanis, they will approach these chapters without Krishna actually. They'll take out Krishna out of these chapters. So that's how Krishna is telling this knowledge is basically knowing not only about the material elements. No. Knowing about material elements, knowing about the Atma, and knowing about Krishna. तीनों चीजों के बारे में जब पता होगा, उसे मैं क्या कहता हूँ, ज्ञान कहता हूँ। हे अर्जुन, मैं उसे क्या कहता हूँ, ज्ञान कहता हूँ। सो डिस्कस मोर टुमारो, राइट?